Good evening, guys. My name is Maurya Hanspal, and in this session, we gonna have a good talk on stock markets in general. Okay. So in this session, I won't be like particularly like talking about the reasons of the crash in stock market, like not the crash, but the correction in stock market that we have seen in the recent days. But like some basic terminologies that you must know while you are investing into stock market, or like whether you are the purpose for investing or trading. Okay. So first of all, since I've talked about like both investing and trading, so firstly let's understand the difference between investment and trading. And what exactly is the difference between investment and trading? So what exactly do we understand by investment? Investment is something which is made for a longer term period. Okay. That is at least more than 1 year. And when someone is interested to like hold the stocks, like someone is like not interested in buying and selling on a day-to-day basis, in that cases the person can go for investment, because a large number of people, they do not have time to track the stock market like 24/7. That is from sitting from 9:15 a.m. in the morning to 3:30 p.m. in the morning, they cannot see the charts, all that indicators and all. Okay, so ultimately they do not have time to see the market movements on a short term basis. So what do these persons do exactly? These people go for long-term investment purposes. That is, they buy the share and they tend to hold the share for a longer period of time, at least for more than 1 year. Okay, so that is also called a buying and hold strategy. Investment is also called a buying and hold strategy. So like what exactly happens when we are like holding an investment? Okay, and we sell that investment after 1 year. After 1 year, we sell that investment. So all the gain that we would be incurring on that, like would be called your capital gains. The gain that we incur while selling the investments, your capital gain. मान लो कि 1 लाख की investment है, that turns out into like 1,50,000 after 1 year. And after 1 year, you sell that investment whose original cost was 1 lakh rupees at rupees 1,50,000. Your 50,000 rupees is your capital gain and it is not taxable. Okay. Your capital gain is only taxable when it exceeds the 1 lakh amount. अगर like 1,50,000 की जगह गेन हो जाता मान लो like 2 लाख रुपीस का, ठीक है, तब भी टैक्सेबल नहीं होता. तब भी टैक्सेबल नहीं होता. Gain taxable tab hota when the gain is in excess of 1 lakh. Be it like, for example, the gain had been like 2 lakh 10,000 exempted. ठीक है, बट 10 लाख एडिशनल जो 10 लाख है उस पर 10% लगेगा. मतलब कि आपको लाइक वन जो 10,000 है लाइक उस पर 10% लगेगा एंड 1,000 रुपीज टैक्स में जाएगा. एंड दैट इज योर कैपिटल गेन्स टैक्स. When you are holding your investment for more than 1 year and selling it after 1 year, all the gain that you are making in excess of 1 lakh is taxable. And make note of one thing, only the excess amount is taxable. अगर 2 lakh 10,000 का gain है तो 1 lakh 10,000 won't be taxable. Just 10,000 would be taxable. Okay. But if you are selling those investments in less than 1 year and you are gaining, so that would be a short term capital gain. अगर gain हो रहा है, ठीक है, अगर लॉस हो रहा है तो इट्स लाइक शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस. अगर कैपिटल लॉस हो रहा है तो इट्स लाइक शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस. ठीक है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है ये. ठीक है, एंड दिस वाज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में क्या है, इफ यू मेक प्रॉफिट while selling your shares in less than 1 year, 365 days से पहले you sold your shares, then like whatever profit you earn, like you will be taxable 15%. Whatever profit you earn, 15% of it would be taxable. Okay. अब गेन की इसमें कोई 1 लाख की लिमिट नहीं है. अगर 10 रुपए भी कमाया है प्रॉफिट तो 10 रुपए का 15% वुड बी टैक्सेबल. 10 into 0.15 it would be taxable. Okay, 1.5 rupees देने ही पड़ेंगे. That was the concept of capital gain, like when you are holding the equity shares in the market, where capital gains tax and short-term capital gains tax. So like this must be clear to you. So like that was the purpose of investment. Like when we are buying the shares and we're holding the shares for more than 1 year and we do not have time to track the market in general. So that is all about investing. So what do we mean by trading? So trading is something which is short term in nature. ठीक है,
and you are like not holding the share for 1 year or more than 1 year, and that we like popularly call it as the intraday trading, कि आज आप ही शेयर खरीद रहे हो एंड शेयर बेच रहे हो आज के डे में, so that we call it as trading. And trading is like further divided into two parts. जैसे कि अपना like investment into like two parts थी, like one was a short term investment and the other was a long term investment. Short term investment, if you are selling the shares in less than 1 year and 15% capital gains tax लग रहा है अगर gain हुआ है तो. Whereas in long term, you are selling the shares after 1 year and long term capital gains tax लग रहा है if your profit or gain is in excess of 1 lakh rupees. Whereas trading हमारी short term long term नहीं होती है. One is your swing trading and the other is your scalping. One is your swing trading and the other is your scalping. So what happens in swing trading? Swing trading is basically based on the volatility in the market. On the volatility in the market. हो सकता है कि मार्केट एक कंसिस्टेंट ऊपर नहीं जा रही या मार्केट कंसिस्टेंट एक पैटर्न में नहीं है, ऐसा पैटर्न चल रहा है एंड नो वन नोज मार्केट कहाँ जाएगी. So these people try to trade in like volatility which is quite difficult. यहाँ पे प्राइस कम होगा तो यहाँ पे खरीद लेंगे, यहाँ बेच देंगे. अगर यहाँ पे नहीं बेचा तो लॉस है, एंड हो सकता है कि लॉस इससे भी ज्यादा हो जाए. तो स्विंग ट्रेडिंग होती है, इट इज बेस्ड ऑन द वोलेटिलिटी ऑफ द मार्केट एंड इट इज क्वाइट डिफिकल्ट एंड यू नीड टू हैव experience and professional experience in trading when you are doing it as a swing trader. Okay, so like people try to see the VIX indicator, that is your like volatility index of India, एंड इसको बोलते हैं कि मान लो इसकी वैल्यू मतलब कि 90, मतलब लोग बोलते हैं कि 15-20 तक जाती है, बट इन रियल लाइफ इट डजंट. अगर 20 से ऊपर इसकी वैल्यू जा रही है लाइक विच वी हैड लाइक इन द प्रीवियस डेज, तो मतलब द मार्केट इज लाइक ह्यूजली वॉलेटाइल एंड बहुत ऊपर नीचे हो रही है. एंड द सेम थिंग हैपेंड इन द प्रीवियस डेज एज वेल. बट अगर 20 से नीचे है अगर विक्स की वैल्यू, देन मतलब कि मार्केट स्टेबल है, या तो मतलब कि ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है या फिर कंसोलिडेशन में है. ठीक है, बट वोलेटिलिटी नहीं है कि ऊपर फिर नीचे ऊपर फिर नीचे, नहीं. सो व्हेन द वोलेटिलिटी इंडेक्स इट टेंड्स टू बी मोर देन 20, so investors like should become caution. इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स मतलब कि ट्रेडर्स बेसिकली, ठीक है, बिकॉज इन्वेस्टर्स को तो मतलब कुछ फर्क पड़ना नहीं है बिकॉज दे आर फॉर लॉन्ग टर्म. ठीक है, तो मोरली लाइक द ट्रेडर्स मस्ट गेट कॉन्शियस बिकॉज द काइंड द वोलेटिलिटी इज हाई इन द मार्केट. वेराज अगर 20 से कम है तो इट इज फाइन. ठीक है, तो दैट इज द स्विंग ट्रेडिंग. बट स्कैल्पिंग में क्या होता है, you can have the concept of like volatility as well, but this trading is done within seconds. एक एक सेकंड में लोग खरीदते हैं बेचते हैं, एक एक सेकंड की ट्रेडिंग होती है. ठीक है, अगर हम मतलब जाएं लाइक इफ यू गो टू या इफ यू गो टू ट्रेडिंग व्यू, चार्ट देखो, when you will go to the start, या 30 मिनट्स का तो ऑप्शन है, यू हैव द ऑप्शन ऑफ इवन लाइक 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 5 सेकेंड, 15 सेकेंड, 30 seconds, 1 minute. People are trading in this short duration as well. Okay, and they're seeing the market second by second, second by second, and कितना कॉम्प्लेक्स हो जाता है. यहाँ पे खरीदा बेचा फिर यहाँ खरीद लिया, यहाँ बेचा यहाँ खरीद लिया, जब मार्केट नीचे हुई खरीद लिया फिर यहाँ बेच दिया. सेकंड्स में खेल रहे हैं, सेकंड्स में. दैट इज कॉल्ड स्कैल्पिंग. ओके, दैट वी कॉल इट एज स्कैल्पिंग. So when we talk about investing, so let's summarize in detail. Like when we talk about investing, investing is for a longer term period. That is when you are buying the shares of the company for more than 1 year, or at least more than 1 year. Even 1 year, it won't be termed as investing. Okay, neither it won't be termed as trading. अब ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं कि शॉर्ट टर्म है तो लेस देन 1 year, like we'll call it as trading, because a large number of people are using the words of trading for less than 1 year. ट्रेडिंग इज बेसिकली फॉर अ सिंगल डे, तुम खरीद रहे हो बेच रहे हो, खरीद रहे हो बेच रहे हो. ओके, और मे बी फॉर अ फ्यू डेज, बिकॉज नाउ डेज बाय नाउ सेल लेटर, बाय नाउ सेल लेटर हैज कम इन, your BNSL, not BSNL, BNSL, बाय नाउ एंड सेल लेटर. तो आज खरीद के तुम कल बेच सकते हो.
ठीक है, पहले होता था ट्रेडिंग में कि तुम्हें आज खरीद के तुम्हें आज ही बेचना, ठीक है, बट अब ऐसी भी स्कीम्स आ गई, तुम खरीद के इफ यू आर लाइक नॉट गेटिंग एन अप्रोप्रिएट प्राइस यू कैन सेल इट टुमारो, ठीक है। बट ट्रेडिंग के लिए कोई 365 डेज की वेट नहीं करता इन अ वेरी प्रैक्टिकल वे लाइक विच आई टॉक अबाउट। Investing is for a longer term period, more than 365 days, more than 1 year. If you are selling the shares after 1 year and making a capital gain, that would be taxable if the gain is more than 1 lakh. 1 लाख की इन्वेस्टमेंट है और 2 लाख कमा लिए तो 1 लाख पे टैक्स नहीं लगेगा। अगर 2 लाख 1,000 कमाया, 2 लाख 1,000, उस 1,000 पे टैक्स लगेगा 10% का, 100 रुपए का। If you are selling the shares in less than 1 year, that would be short-term capital gain, अगर gain हो रहा है, and that would be charged at 15% का rate, no matter how much gain you have। तो वहाँ पे 1 लाख की लिमिट नहीं है, 15% फ्लैट लगेगा। अगर 1 रुपए का भी गेन हुआ है तो 0.0015 टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। दैट इज फॉर इन्वेस्टिंग। And when we talk about trading, trading is for short term, 2 days, 3 days, 4 days, but not for 365 days, okay। मेरा मानना है अगर तुम 1 महीने से भी ज्यादा ट्रेड कर रहे हो, नॉट फ्रॉम द परव्यू ऑफ सेबी और गाइडलाइंस, दैट कैन बी कॉल्ड एज इन्वेस्टिंग, बिकॉज स्टिल तुम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तुम्हें चार्ज हो ही रहा है, राइट। बट ट्रेडिंग बेसिकली 4-5 दिन से ज्यादा के नहीं है, बट मोस्टली द ट्रेड्स आर डन इन वन सिंगल डे ओनली। यू माइट हैव व्हाट अबाउट द ऑप्शन ट्रेडिंग, आज खरीदा आज बेचा, प्रॉफिट होने को बहुत हो सकता है, बट ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉसेस प्रॉफिट से भी ज्यादा है, ठीक है। तो हम आगे नहीं जा रहे। तो ट्रेडिंग की बात है, ट्रेडिंग इज इनटू टू पार्ट्स, वन इज द स्विंग ट्रेडिंग एंड वन इज स्कैल्पिंग। सो व्हाट हैपेंस इन स्विंग ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग इज बेस्ड ऑन द वोलेटिलिटी ऑफ द मार्केट। मार्केट इज नीदर इन अ मोमेंटम ऑफ अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स और इन कंसोलिडेशन, ऊपर नीचे जा रही है। In that, people try to enter the market, they have technical skills and expertise and professional experience, they buy and sell, and they work on the volatility index, that is our VIX indicator। 20 से ऊपर की वैल्यू है लाइक जो वी हैड इन पास्ट डेज, तो बात थोड़ी खतरनाक है। अगर 20 से नीचे है तो इट्स फाइन। एंड द अदर इज स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग इज सेकंड में तुम ट्रेड कर रहे हो, तुम मिनट में ट्रेड कर रहे हो, एंड वोलेटिलिटी कैन बी देयर इन स्कैल्पिंग एज वेल, बिकॉज तुम सेकंड में ट्रेड कर रहे हो तो मान लो कि वोलेटिलिटी होगी ही होगी। तुम्हारा अगर लाइक 1800 का प्राइस चल रहा है, तुम्हारा वो 1 घंटे 2 घंटे में 1800 के आसपास ही रहेगा, ठीक है। बट सेकेंड्स में वो 1800.01 होगा, 1800.001 होगा, 1800.020 होगा, तो वहां पे फिर वोलेटिलिटी भी आ जाती है। जितना शॉर्ट टर्म तुम ट्रेड कर रहे हो उतनी लाइक वोलेटिलिटी मार्केट में बढ़ती है। एंड नाउ डेज दे हैव स्टार्ट लाइक बाय नाउ एंड सेल लेटर, तुम आज शेयर खरीदो एंड कल परसों बेच दो, okay, like these schemes have come up into the market। And one more thing, like when we talk about investing is for a longer term, जो मैंने बोला, you use your fundamental analysis in investing। पूरी fundamental analysis की series I have made on this। So fundamental analysis is basically when you are trying to know the past performance of the company and trying to project the future performance, seeing the annual report, P&L, balance sheet, cash flow, सब कुछ, okay, and you are going ahead to analyze the report of the company and the future performance देख रहे हो। बट इन ट्रेडिंग यू टेंड टू यूज टेक्निकल एनालिसिस, तुम टूल्स पे वर्क करते हो, जो मैंने यहाँ पे चार्ट शो करा था, तो टेक्निकल टूल्स एंड वेरियस इंडिकेटर्स एंड टेक्निकल की सीरीज अभी लाइक चल ही रही है, सो लाइक यू पीपल कैन वॉच दैट। So for this session, I wanted to explain the basic difference between trading and investing. In the second session, like which is today only, we'll talk about like some tools in stock markets.